A major uproar rocked the Odisha Legislative Assembly during the budget session on Tuesday as tension flared over controversial remarks on Biju Patnaik. The House witnessed loud protests and slogan shouting right from the start of the question hour following comments made by MP Nishikant Dubey. Members of both the Biju Janata Dal and Congress strongly objected to the remarks, raising slogans inside the assembly and demanding accountability. The situation further intensified as CPIM MLAs staged a protest near the speaker's podium, expressing solidarity and respect for the late leader. Despite the chaos, proceedings briefly continued, but repeated disruptions forced the speaker to adjourn the house till 11:30 am. Meanwhile, Law Minister Prithviraj Harichandan clarified that the remarks made by Nishikant Dubey were his personal views, describing them as inappropriate and unacceptable. सांसद श्री निशिकांत दुबे ओडिशार विशिष्ट एवं वरिष्ठ जननायक स्वर्गत बिजू पट्टनायक विषय रे जो नकारात्मक टिप्पणी देइचंती ताहा सरकार संज्ञान को आसीची। सांसद श्री दुबेंकर ए जो मंतव्य ये संपूर्ण रूपे तांकर व्यक्तिगत मत ये एभली एक मंतव्य अपरिणामदर्शी मंतव्य एक कथा कौनसी मते भी ग्रहणीय नुहे एवं तांकर ए मंतव्य माननीय मुख्यमंत्री आरंभ करिकी आम समस्त को गभीर भाव में व्यथित करिछि एवं आमे आशा करूछु एभली मंतव्य किंतु तापरे कोनोसी प्रति मंतव्य केही जेमिति न देबे ए अग्रहणीय कथा को आउथरे जेमिति पुनरावृत्ति न हबो एतिपई आमे समस्त को निवेदन करूछु। तापरे कोनोसी प्रति मंतव्य दबा एवं या उपरे नै कोनोसी राजनीति करिवा बिजू बाबूंकर जो सम्मान अच्छे ओडिशा प्रदेश रे ताकू निश्चित भाव में व्याहत करिवो। तेणुकर आमे आ ऊपर कौन फर्दर आलोचना न करने को समस्त को विनीत अनुरोध करूँ।